verbs, it will be this. You have to take boys and girls, 2 boys, 2 girls. You have to take and administer on these state called state trait anxiety inventory. Now, how to administer this test? Read. You have to give this instruction. Read each statement and select an appropriate response to indicate how you feel right now. Now, whenever you will be administering this test to anybody, you give this instruction. कौन वर्तमान तुमको जहाँ लागुची से अनुसार तुम रेस्पॉन्स दियो. Now, there is no right or wrong answer. Yeah, here is just statement. एवं ताहार किसी भूल ठीक नहीं. तुमको जहाँ फील करूचो, तुमको जहाँ लागुची से अनुसार you give a response. Do not spend too much time on any one statement. गोटे स्टेटमेंट को खाली चाहिए समय नहीं से कथा नहीं. You go ahead, but give the answer which seems to describe your present feeling best. तम निजर फीलिंग टाको बेस्ट डिस्क्राइब कराइबा पई जोटा को तमे आंसर बोली भाबुछ, जोटा को तम रेस्पॉन्स बोली भाबुछ सेटा को तमे दियो. Now, there are statements, and if you give a एको गोटे तमे ये करिवो माने काने एटा अटैच हबो तमरो रेस्पॉन्स सीट तमरो माने रॉ डाटा हे कि अटैच हबो ता टेबल ले. तेनु गोटे एको टेबल भलिया करी कि 1 2 3 4 एटा को एठी की घुंचेई दबो नले एई रहिले भी किछ असुविधा नहीं. 1 means not at all, 2 a little bit, 3 somewhat, 4 very much. एला रेस्पॉन्स कैटेगरी. तमे प्रथम आइटम हला I feel calm. What is your condition now? ना मु मते काम लागुची, मते शांत लागुची. I don't feel any kind of agitation, any kind of other thing now. सी जागारे सी जदि कहबा मते माने if his or her response is कि बुझिबा दिते नाही तार जदि रेस्पॉन्स हला जे नाही मते जम्मा I am not calm at all, मते बर्तन जम्मा शांत लागुनी, भारी अधैर्य लागुची, ताले से दबो 1 को गोल बुलेइबो. सेमती लाग अधैर्य शांत लागुनी किंतु टिके अधैर्य लागुची, ये टिके शांत लागुची, बेसी अधैर्य लागुची अल्प माने स्लाइटली. यदि सेकंड चॉइस से देला, थर्ड चॉइस somewhat I am feeling calm now, and fourth choice I am totally calm now. 4 1 2 3 4 रु से जाहाले गुटे चूज करी करी तारो रेस्पॉन्स दबो. तमे जदि चाहुचो वर्तमान तमे you can also apply it on yourself. तापरे तमे तम निज भितर ये करी करी मध्ये ताको देखि पारे. Now, same thing. Second question, I feel secure. खाली जदि जो जगह जाकू पचारुच से जदि वर्ड रो मीनिंग टा को क्लियरली न बुझी पारिला ताको तमे बुझे दबो पड़े. I feel secure means I am not afraid of anything now. Nothing is there which gives me threat or afraid. I am afraid of like that. तो मत सिक्योर लागु मोर किछ असुविधा नहीं. से अनुसारे केते सिक्योर लागुची 1 2 3 4 हला. Now I feel tense. मते छटपट लागुची वर्तमान. I am tensed. For some reason I don't know, but I am tensed. But for some reason I know, for this reason I am now tensed. That is there. Then I feel strained. Anybody who can tell me when I say I feel strained, कौन ताको बुझे परिबो? What
explanation you will give. Sir, what कौन थिला actually देखा मते स्ट्रेंड लागुची माने कोन मते लागुची as if something wrong is happening to me. मोर किछि स्ट्रेंड थेला बळे लागुची something wrong is happening to me. That is strained. Then I feel at S. Means breaking? I am normal. I am feeling good. I am feeling easy. Everything is good for me now. And then I feel upset. एकोटिके term गुड़ा को बुझे को पड़ी कारण there are terms which are very close to each other. तांको समय को बुझे को पड़ी बुझे कि तांकरो response देलो. Any question about this? I am presently worrying over possible misfortunes. मते लागुची मोर जेमति आगु को किछि भाग्य खराब पड़िबार अछि. Some kind of negative things are likely to happen to me. Then I feel satisfied. I am frightened. I feel uncomfortable. I feel self-confident. I feel nervous. I feel jittery. I feel indecision. I am relaxed. I feel content. I am worried. I am confused. In fact, या भितर बहुत वार्ड अच्छे जोड़ा का पाखा पाखी समान एकदम किंतु ये सब वार्ड को से रेस्पोंड कले some kind of anxiety will be reflected in his response. हला एई भलिया 20 टा का आइटम 4 जण पिलां को देई करी बा 4 जण लोक तमर जे तमर चॉइस 4 जण को देई करी तांकर रेस्पोंस को रिकॉर्ड करिवो रॉ डाटा टेबल रे तमर आरंभ वाला प्रथम काम ए रेस्पोंस नबो आइटम 1 कोन देची माने केते देची स्कोरिंग गुडा को सब रेस्पोंड करिवो 4 जण कर एनी क्वेश्चन अबाउट खातरे लिखिला बेलको एगुड़ा दरकार पड़ो तेणु गला तापरे रिजल्ट बाहर करिया पे हेले ए भितरु किछि आइटम अछि जुडाक तापरे प्रति पिलारो एंजाइटी स्कोर टोटल एंजाइटी स्कोर बाहर करिवो एबोव दैट एंजाइटी स्कोर विल रेंज फ्रॉम 20 to 80 20 रु आरंभ होइकरी 80 पर्यंत स्कोर 80 भितरे तांकर स्कोर रहइबो कारण जने जदि सब गुडा को 1 1 देला ताले से 20 तार स्कोर हबो जदि कुथरे 2 कुथरे 3 सब गुडा को 4 देला ताले तार 80 हबो एई भलिया the score will range between 20 to 80 but on the other side all those responses are not all those items are not to be scored similarly. There are some items which are to be reversed which would have reverse scoring किछि आइटम रही छै भीतर मु कहिबी को आइटम गुडा को से गुडा को रिवर्स स्कोरिंग रिवर्स स्कोरिंग माने से जोटा 4 देथिबो आइटम कोडा को रिवर्स स्कोरिंग चिन्ह मारा तमे कहि दउछि 1 न लेखिनियो 1 2 5 8 11 15 16 19 20 लिखिदेला समस्ते एई आइटम गुडा को रिवर्स स्कोरिंग हबो रिवर्स स्कोरिंग माने जोठी से 4 देथिबो एनीबॉडी 4 टा केते एक्चुअली रहबो स्कोर रे अरे 1 सर नंबर गुडा का आउथरे रिपीट करिवे कोटा कोटा 1 2 5 8 11 15 16 तापरे 1 2 5 8 11 15 16 19 20 अगेन सर हां वर्तमान रिवर्स स्कोरिंग हला
जे जे मनकर जने पिला आई फील काम 4 देइची एटा देइची ताले तार स्कोर हबो 1 3 देइची स्कोर हबो 2 2 देइची स्कोर हबो 3 1 देइची स्कोर हबो 4 बुझियला कि एकटा 4 No, sir. 2टा 3 हाँ सदिया बुझियला कि No, sir. रिवर्स स्कोरिंग आप फिर से समझा सकते हैं क्या? reverse scoring. I am telling about reverse scoring. These are the items where you have to conduct reverse scoring or carry out reverse scoring. Item गुड़ाक मैं आगो कहीदेली 1 2 3 4 हब ना 3 4 जहाँ अच्छी से एकटा रिवर्स स्कोरिंग हब एक रे जने जदि आई फील काम तमे केते दब निजुकु सदिया सर हिंदी में बोलेंगे क्या? हैं हाँ अभी जो आपने ओडिया में बोला उसको हिंदी में बोलेंगे क्या? आपने जो क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन हिंदी में हाँ दैट जी विल बी हिंदी में इंग्लिश में नहीं चलेगा क्या हाँ चलेगा सर इंग्लिश या हिंदी तो चलेगा अच्छा हिंदी मैम ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इसलिए हिंदी हाँ इट्स ओके सर इट्स ओके नहीं you see when you have to after you administer this test on your subject then next thing is you have to find out the score for the subject for each item number 1 supposing your subject has given a score response 4 this is the subject response 4 she has rounded the 4 as his or her response. Now, when she has scored given 4 as a response, in reverse scoring, this is an item where reverse scoring is to be done. In reverse scoring, the score will be 1. The actual score that he will be getting will be 1. And if he has given 3, then the actual score will be 2. If he has given 2, the actual score will be 1. Sorry, 3. And if he has given 1, actual score will be 4. The score will be converted as reversed. Do you get the ideas, Satya, or anybody for that matter? Yes sir I get it now. Giving 4 means, particularly these items that I referred to. Giving 4 means the score will be 1. Giving 3 means score will be 2. The giving 2 means score will be 3. And giving 1 means score will be 4. That is reverse. Means you have to, for this side, you have to go this way. And once you made the reverse scoring of the items, other score, supposing item 2, someone has given 4, what will be his or her score? 4. 1 It will be 4 because it is not a reverse item. Sorry. It is a reverse item. It's a reverse item. I am telling item 3. Item 3, someone has given 3. What will be his or her score? 3 3. Because it's not a reverse scoring. Like that, you enter the score of each subject. Chari jan karo empty subject 1. Raw data table prepare karibo. Subject 1, subject 2, subject 3, subject 4. Subject 1 the score after being reversed. जोगुड़ाक reverse हवा कथा the scores which need to be reversed, you do it reverse and then put it. And then you get the total for each subject. Total, the next line will be total score on trait, state and trait anxiety. Now, if the state and trait anxiety total is found to be 20, the person is absolutely free from any anxiety. If score is 20, the person is free from anxiety. He or she does not have any state or trait anxiety. Then
if the score is in between 20 to 30, any score, 25, 26, 27, 28, any score between 20 to 30, the person is considered to be having some normal day-to-day anxiety. Nothing to be worried about that. Some normal day-to-day anxiety. And if the person's score is, if the person's score is something between 30 to 50, then the person is having some preset of clinical anxiety. There is some kind of anxiety which is considered to be beginning of clinical anxiety. The person is likely to suffer from kind of anxiety disorders in future, or the person is liable or vulnerable to anxiety disorder. You can call it a preset anxiety. And now 50 beyond. Any score 50 beyond is to be given interpretation as something, the clinical anxiety as evidenced in straight and trait anxiety analysis. Now you find out the anxiety score for each of the four. Then case by case, 1, 2, subject 1, interpretation. What is his or her anxiety score? The more the anxiety score, the more is the person supposed to be in anxiety. And then you explain case by case, case 1, result, and discussion. In discussion, you make it like this. Then I told you how to write introduction. First, you write something about anxiety, types of anxiety. Then you specifically write about state and trait anxiety. Then you write about methods. In methods, you write the plan and design. What is your subject? How many subjects? What test you are? What is the format already I have given in other test format? Like that format, you prepared your plan and design. Then step by step, your procedure, your instruction to the subject, some description of the instrument, age, state anxiety scale, error description, and like that. Then you go to the results, and also you give some graph like that. That is, what is the anxiety level of the four groups. Give some bar graph. You can give a bar graph. Data neiki bar graph dei paribo. This is the anxiety. Whatever, you get to do this practical and complete it. Any question about this practical? कार कौन आउ पचारिबार अछि किबा बुझिबार अछि ए प्रैक्टिकल एडमिनिस्टर करी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट करेबा पाई. Anybody? Sir, for each test in each practical, we have to take only one person, right? One, no, 4 persons. For each test? No. For this practical, for four persons. Other 2 that I have conducted, that is for 2 persons. Okay. That means your BEX inventory on 2 persons you have to report. Your Rorschach on 2 persons. And this, depending on the time that you will be investing on a practical, I am telling you, and because you are supposed to be appearing PG examination, there has to be some kind of group testing, including more subjects. Here you have to take 4 subjects. Any other question? Now, this is your 3rd practical being covered. Any other question about the practical being given to you in earlier classes? Rorschach or Rorschach kori habo tame tike ta pare jaikiri ghare check kariya katha kon tomar asubidha. Anybody Rorschach and BEX depression inventory, any problem about that?
The problem is not that you will be only reporting in your record. The problem will be in Viva. You must have to have clearly understood what is the practical, what is the kind of work that you have done, what is the result, how you are explaining it. That will be more important because you will be assessed in Viva was. Yes. Any question? No, I assume that all of you have understood. Anything, Bonaja? Sir, state trait anxiety scale ro amku questionnaire sir attach kariya padibo with response. Questionnaire, mane you have to give the raw data. When you will be giving the raw data, Yes. you have to write the questions by your. It's Sir, not we that have to write. Question 1, question 2, question 3, like that, and then subject 1 response to subject 2 response. There will be 5 columns and 20 that you have to write, not you have to attach. Okay, sir. That will be your raw data kind of thing. Raw data kind of thing you will be everywhere. Supposing in I have already given you how to write the present the raw data in Beck's depression inventory. Yes, sir. ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ 1 ରୁ 20 ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଗୁଡାକ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ 1 ସବଜେକ୍ଟ 2 ସବଜେକ୍ଟ 3 ସବଜେକ୍ଟ 4 ଦ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ କିଏ 4 ଦେଲା 3 ଦେଲା 2 ଦେଲା ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଦ ସ୍କୋରିଂ ରିଭର୍ସ ସ୍କୋରିଂ ଯୋଉଟା ରିଭର୍ସ ସ୍କୋରିଂ ହବ ତା ସାଇଡ୍ ରେ R ବି ଲେଖିଦବ how you will make that is also your choice ତମେ R ଲେଖିପାରିବ ମାନେ ଏଇ ଆଇଟମ 1 will be reverse scoring ତା ସାଇଡ୍ ରେ ଲେଖିଦେଲ. Any question? Any other question? तमे practical करिकरी practical record maintain करबा पई आउ जा आवश्यक होची पचार. तापर नेक्स्ट एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो जाइथिली आ तो रिवर्स स्कोरिंग ता टिके कहिबे कि माने केमती कोन करे. हां रिवर्स स्कोरिंग हला सुनो मु खाली तार कांसेप्ट भी दी बुझे दउची. The final score in the test is about the anxiety of the subject. ये टेस्ट रो फाइनल स्कोर तमर मन कर तमर फाइनल स्कोर आसिला 30 आउ जनकर आसिला 50 टोटल फाइनल टोटल who is having anxiety more anxiety ता 50 जार 50 अछि नहीं कि कांसेप्ट कोन द मोर द स्कोर हायर इज द एंजाइटी. यस सर. अच्छा आइटम नंबर 1 I feel calm. One who put the score as 4 is he more in anxiety. ये कहूँ मु बहुत भलो शांत अच्छी. नो सर नो सर. नो तेणु एक्चुअली ए 4 टा तार रिप्रेजेंट करबो जदी एंजाइटी की एटा केते हबो सर 1 हबो नेचुरली. एनी क्वेश्चन 4 टा जदी तार एंजाइटी रे रिप्रेजेंट कला एटा काम टारे 4 एंजाइटी रे जदी समान इज 4 इन द काम सर 1 एंजाइटी इज 1 4 3 in calm anxiety re 2 in calm anxiety re 3 1 in calm anxiety re 4 tenu reverse is. Any other question or else we will go to the next practical. सर रोस्टाक्र टिके स्कोरिंग ता टिके कहिबे कि सर स्कोरिंग नहीं मु रसाक स्कोरिंग लास्ट को कहि आको मु आज अन्य प्रैक्टिकल ला कवर करछि. हां मु आउथर रसाक जाई कि रसाक स्कोरिंग कहि. Now वर्तमान state anxiety is over. तापरे मु अन्य आउ गोटे
मोटे फोन गुटा आसला कटि गला मु am I audible now सुबुची ना Yes, sir. You are Yes, sir. ना कला वर्तमान आउ गोटे मु प्रैक्टिकल जोटा कि तमर अछि केस रिपोर्टिंग हला तीनटा प्रैक्टिकल मु कवर कली दिस इज द फोर्थ प्रैक्टिकल जोटा अछि केस रिपोर्टिंग मु स्क्रीन शेयर करूची केस रिपोर्टिंग प्रैक्टिकल टा केस रिपोर्टिंग कौन इंट्रोडक्शन लिखा है व्हाट इज केस रिपोर्टिंग एंड हाउ टू रिपोर्ट द केस case reporting case study the case study is not itself a research method but researchers select methods of data collection like that whatever now case study ro advantage कौन ये कौन गला ऑब्जेक्टिव्स वर्तमान ए केस रिपोर्टिंग टर ऑब्जेक्टिव कौन to collect the case history of a collect the case history of 4 college students 4 high school students बुझेला ना नहीं 4 जण हाई स्कूल पिलांकर केस स्टडी तमे नबा पई चाहुचो and those students in the school who are being reported are as having some difficulties or issues स्कूल रे जो पिलांकर किछि इश्यू अछि सेही भलिया 4 जण पिलांकर केस स्टडी नबा पई तमे चाहुचो केमिति नबो केमिति रिपोर्ट करिवो एनी बुझियला ना नहीं ऑब्जेक्टिव्स यार तापरे मेथड प्लान एंड डिजाइन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ केस स्टडी टेकिंग ऑफ एडोलेसेंट विल बी यूज्ड एडोलेसेंट मानकर केस स्टडी नबा पई गोटे स्टैंडर्ड फॉर्मेट अछि जोटा ताको हमें यूज करूछु एनी थिंग दैट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर एन एडोलेसेंट एंड देन will be used to obtain the case profile of a lekhala it is of 4 students eta on pila manango pai undergraduate pila manango pai required but for you it is 4 class 9 class 10 whatever you think you can take class 10 you can take 2 class 9 2 class 10 whatever is your even you can take also class 8 but not below 8 9 10 from these 3 classes you have to take 4 students and it is better to include boys and girls so the dita poor dita general that is also good and your basic inclusion criteria will be that those who are reported to have a lack of interest in studies teachers report that these students are not have good interest in their studies bhalo patha padibare ankar mono nahi if they say something like this then those are your targets a schematic presentation of plan and design is given below now purpose of admin to obtain the case profile of a eguda sabu change karibo mu to eta pathai debi you will have to change all this a nahi case profile of kon lekha baiti 4 students. 4 high school students with problem behavior. Any question? Anybody else? Particularly high school students having reported to have some kind of problem behavior will be your case. Say, 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନବ and subject ଏଇଠି ଲେଖା ହବ subject ସେମାନଙ୍କ ଏଜ ନା ଦରକାର ନାହିଁ ଏକୁ as per your requirement you fulfill ତମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏକୁ fulfill କରିବ now subjects 1 detail 1 2 3 4 पुनी 4 जनकर always it is a format that you write about the subjects detail who are they how old are they what is their education what is their problem whatever is
required. You have to write about the subjects and then instrument. Now I'm telling you about the instrument, a standard format for case history taking of adolescents. It is there available with your practical book also, some practical record for your IGNU practical book जो अच्छी ता भीतर भी अच्छी. A standard format for case study taking of adolescents seeking counseling help is used for obtaining the case profile of जहाँ कुछ करी. But standard format अच्छी କାହାର ନା ଯେ counseling support ଚାହୁଁଛି. More I am not able to read. Yeah, I'm getting disturbed to take my academics and all that. एटाको fill up कला instrument. Then procedure. The investigator visited a nearby school and contacted the teachers to know about the problem behavior of some student. One of the students in class 10 was purported to be seriously lacking in interest in studies. It is some one because it is we are supposed to get 4 results. तापर आसला result. ମୁଁ ଏଇ standard format ଟା कोण ମୁଁ तुमको देखै दे दउची तापर result अनुसार result preparation हो. Standard format A रे name. The format is like this. जो question है पे तुम दिया जो भाई तुमको पठेवी तार format is like this. That is A name. पिलर ना लिखा हो नहीं. I've given X, Y, whatever you like you can give. Then date of assessment. कोउ दिन assessment करिचो. Here it is 11/10/2016. Age 14 years. It is to be attached to your practical. And one thing I tell, trait and state anxiety the attach करदेले मध्य भलो. केवल याकू attach करिया दरकार नहीं. Bates inventory. Sir, Bates depression inventory will attach or not? नहीं, Bates you attach. Okay. केवल माने रसाटा attach कली चले. नहीं, there is no hard and fast that you should attach or you shouldn't attach. But once you attach it, it becomes a complete profile of any kind of. Yes, sir. Attach करो. कारण मु attach न करिया पे कहि दे जे इतपे जे attach कले कोन होची न तमे तो एक्सटर्नल पेपर करी जोडी के attach करू जे सेति के माने प्रैक्टिकल रेकॉर्ड ता बट वॉल्यूम ता टिके अबागिया कर दउ. ताको टिके स्मूथली attach करिवो जदी it will be better. Sometimes the external examiner they ask what is your field document. The field document देखै परिबोनी जदी सने पुनी they may attach करो. As much as possible you give attachment to your work. Yes, sir. Hala. तापरे एटा sex, education, family structure, name of the informant. Name of the informant means who reported you that the person is having some kind of issue, some kind of problem. Now, then relationship with the informant. मनका तंग बापा कहले मो पिलारे problem होउछ. तेनु relationship and the length of acquaintances. Say format, this is the format. एबी तू कोटा ए रे कोटा न बुझी पारुछ. Because whenever you will be reporting anything, you will be reporting in the format. This is the format being provided by the IGNU material. Any question, anything, clarification, जहाँ तमे YouTube पूछी जाओ. Now, after this, then format B. This is A. This is B. Presenting complaints for seeking intervention according to the client, according to the informant. Client कहूची lack of interest in studies. मोर पाठ पढ़िया को इच्छा नहीं. Informant बापा कहूचंती don't take concentration into studies. पाठ पढ़ारे जमा मन दउ नाही. These are the two complaints.
केस स्टडी केमती रिपोर्ट करा जाए these are the two complaints and then figures in the right hand and then asila 2 era first part sarla b information specific re then b re second part developmental history जो जहाँ को तमें नेच तार डेवलपमेंटल हिस्ट्री एई जो राइट साइड रे एई जो नंबर टा लिखाई छी इट केते लिखाई छी 4 4 एई एई प्रश्न पाई मैक्सिमम मार्क हला 4 तमे सेउथुरु पिला को मार्क दबो जहाँ विषय रे करूछो मैक्सिमम हला 4 यार मैक्सिमम हला 7 ए पी रो राइट साइड रे जोटा लिखाई छी सेटा तार मैक्सिमम मार्क ए रे कोन अपीयरेंस गेट पोस्चर क्लोथेस ग्रूमिंग जदि कोन सब्जेक्ट इज गुड इन ऑल दीज थिंग्स गेट माने केमिति तार पोस्चर रे चला बुला केमिति करूची केम चलची केमिति ये होची गेट पोस्चर क्लोथेस लुगापटा केमिति पिंदुची सफाना महिला एंड ग्रूमिंग टोटल गेटअप टा कौन ये सब मिसिक जदि सब गुडा को तुमको ठीक लगिला देन 4 टिके टिके नहीं एटा एटा जदि सब गुडा को तुमको माने जो मु कहतली सब गुडा को ठीक लगिले 4 नहीं दिस इज अगेन नेगेटिव स्कोरिंग जदि तुमको लागिला जे से महिला लुगापटा पिंधुची तार लुगापटा सफा नहीं महिला करी करूची बा पिंधिबारे ठीक रे पिंधु नहीं देन सेति पई 1 ग्रूमिंग मुंड सुंडेइनी जोता ठीक रे पिंधिनी जहाँ भी ग्रूमिंग रे जो जिनस सेतरे जदि ठीक नहीं आउरी एके बसुची अबागियागिरी चालुची अबागियागिरी all those things देखिकरी जदि सब all those 4 are not good then you will get 4 जदि ता भीतर को गोटा करे ठीक ठाक अछि अन्य तीनटा ठीक नहीं 3 जदि सब ठीक अछि 0 any question about this बुझी जाओ ठीक खाली appearance रे कौन observed appearance item टाला appearance being observed by the person who is taking a case study तमे याकु ही नहीं करी मध्य तमे you can do the 10टा केस नहीं करी मध्य तमे particularly internship मध्य करि परिबो जो जगह रे Yes sir. any question about this item A So that means appearance is negative marking. negative means bad appearance means 1 for every 1. point बुझ परछ ना नहीं मनकर क्लोथेस रे बैड ताले एक बैड गुड नुहे बैड पे एक गुड 0 Yes sir. if he is bad in all these all these 4 then he will get a score of 4 4 पाइबो से तीनटारे माने खराब गोटा करे भलो देन 3 सफा सुतरा पिंदी किंतु अन्य जिनस किछि नाही मुंड कुंडेनी कि मुह धोइनी दोस काइंड ऑफ थिंग्स इट्स ऑब्जर्व चारि नु केत तम दबो ए एक्टिविटीज गुडा तापर सेंटी डू बिहेवियर ऑब्जर्व पॉसिबल मैनरिज्म्स आसिला नमस्कार कला ना नहीं स्माइलिंग रे किछि कहला ना नहीं मैनरिज्म्स यू नो गेस्चर्स साइकोमोटर एक्टिविटी एक्सप्रेशन आई कांटेक्ट ability to follow commands requests compulsions इतरे 7टा अछि 7 रे 7 नंबर इतरे मैक्सिमम ए जो एग्जांपल ले एठी गोटे पिला को दिया है 1 इतरे दिया है 2 तापर एटीट्यूड्स ऑब्जर्व पॉसिबल
cooperative, hostile, secretive, evasive, suspicious, apathetic. As one thing I would like to do here is that because this is a lengthy questionnaire, you may Yes, take sir. you may take 2 students only Okay. for practical purpose. But when if you will be using it for other kinds of purpose, internship and other, more subjects are required. For practical, I revise 2. Hela ki nahi? Sir, one girl, one boy. One girl, one boy. Nahi, it is your choice also. You can take 2 boys also, you can take 2 girls also. That is nothing. Subject specification is your choice. Only I am telling you the number because it's a PG practical. You are supposed to do it little more. ଟିକେ ଅଧିକା କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି Okay, sir. ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ନିଜେ ଆଗୁଆ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କୋଅପରେଟିଭ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ସିକ୍ରେଟିଭ ଇଭେସିଭ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆପାଥେଟିକ ଇଜିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ଫୋକସ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସିଭ 8ଟା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦିଆହେଇଛି କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତା ଦେହରେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବ ହୋଷ୍ଟାଇଲ 1 ପାଇବ cooperative versus hostile ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ এটা ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ଦିଆହେଇଛି ସମାନ ଇଜ cooperative or hostile ଯଦି hostile 1 cooperative 0 ତାପରେ open secretive ସେ ଯାହା ତା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଶୁଣୁଛି କହୁଛି ଯାହା ଜାଣୁଛି କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସିକ୍ରେଟ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି କିଛି କହୁନି ଓପନ ମାନେ 0 ସିକ୍ରେଟିଭ ମାନେ 1 ତାପରେ କଣ ଅଛି ଇଭେସିଭ ଠକୁଛି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ 1 ନାହିଁ ମାନେ 0 ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ Yes. Again, sir. ତାପରେ ଆସିଲା parental attitude towards pregnancy wanted unwanted means when the child was born whether the parent wanted the child they have an acceptance for the child जोटा कि कहीं माने क्वेश्चनर रही though the person who has made that is also that reflects the parental attitude बुझिएला ना नहीं mother's health during pregnancy जदि एगुड़ा करे जदि it wanted 0 इट लिखा है wanted 0 unwanted 1 normal 0 complicated 1 nature of birth premature complicated delivery head injury jaundice delayed या भितरु जदि जोटा थिबो 1 2 मन कर हेची प्रीमैच्योर हेची किंतु कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी तले 1 1 2 एटा बुझी परछो तो देखि गिरी मार्क माने केमिति स्कोरिंग Yes, sir. करिवो हां मन कर जन्म माने प्रीमैच्योर हेची कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हेची हेड इंजुरी हेची तले तार 3 स्कोरिंग हबो जॉन्डिस थिला जन्म बेले बा जो माने कोन बार्थ बेले पिलांग जॉन्डिस थाए ताले 4 रहबो जा कि भाई इथुर गोटे अछि इथु ए अनुसार तो लिखा है कोटा थिले कोन मार्क दबो तबे देन फीडिंग हैबिट्स ब्रेस्ट फीडिंग बॉटल फीडिंग देन आई एज ऑफ नेक होल्डिंग एडा सब माने मां मान को ठारू आदाय माने आनिबो को समय रे से माने बेको ऊपर को टेकिला ई कला सिटिंग एगुड़ा सब पढ़ी कि तुम तापर स्कूल हिस्ट्री तापर सोशियो पर्सनल हिस्ट्री ये सब थरे मार्क अछि टोटल मार्क रु केते से पाइला सरी गला एति की ए स्केल टा एडमिनिस्टर कला परे सरी गला फाइनली एठी 3 एठी 10 एठी 10 ए 45 रु 10 10 20 3 23 आसला तार सर 45 टा केवल होची डेवलपमेंटल हिस्ट्री पे हाँ
मैक्सिमम स्कोर टा 45 होची डेवलपमेंटल हिस्ट्री पे हाँ डेवलपमेंटल हिस्ट्री स्कोर पूरा 45 तापर आसला फैमिली एंड स्कूल हिस्ट्री 15 सोशल एंड पर्सनल हिस्ट्री 20 सब मिसिक रे एठी देखो तापर रिजल्ट टेबलटा पळे आसला एई तीनटा डायमेंशन रे आसला रिजल्ट तार अच्छा स्कोर डेवलपमेंटल हिस्ट्री तार आसला 9 Good a minute. Any question? Oh, 9:49. এই টেবলটা দেখ ফাইনালি तुमको এই টেবল को कन्वर्ट करिया को पड़िबो डेवलपमेंट तीनटा को डेवलपमेंटल हिस्ट्री कोन स्कूल हिस्ट्री कोन एटाला फाइनल रिजल्ट सोशियो पर्सनल हिस्ट्री कोन से पिला जो पिला नहीं तमरो आमे जाने नहीं छु you will be taking 2 and that way you will have two tables like this result table 1 जनको पई 2 आ जनको पई now score हला 9 maximum score developmental history केते 45 and if someone is having score of 9 out of 45 what is his 10 score 10 score means score out of 10 तमे जेमदी परसेंटेज स्कोर कहउछो स्कोर आउट ऑफ 100 तमर you calculate the percentage सेमदी if you calculate out of 10 it is called 10 score केते 10 score इठी 45 रु 9 हेले 10 रु केते साधारण गणित केते के 2 45 रु 9 हेले 9 पंजा 45 माने 5 गुण माने 5 टाइम्स लेस 10 रो 5 माने 10 डिवाइडेड बाय 5 2 सेंटी तमरो स्कूल हिस्ट्री स्कोर हला मैक्सिमम 15 and he had 7 what is the 10 score had 7 by 15 into 10 7 divided by 15 into 10 4.67 10 score बाहर करियो एटा 10 score रे रिपोर्ट हबो that is the format anybody who is not able to understand what is 10 score बुझी पारलनी कि 10 score तम ना कौन सोनू लिप्ता ना कौन ना हैं सोनू लिप्सा जना सोनू लिप्सा बुझी पारलो हाँ सर आउ किए सुब्रा ना मोर ए ना टिके टिके देखला पर असुविधा होची एनीवे एटा हला तमरो फाइनल रिजल्ट रो रिपोर्ट हला एनी तापरे डिस्कशन करिवो तार को एरिया रे डेवलपमेंटल हिस्ट्री कोन प्रॉब्लम अछि स्कूल हिस्ट्री कोन प्रॉब्लम अछि ना ठीक ठाक अछि दैट इज योर काइंड ऑफ थिंग रिपोर्टिंग एज ए केस तापरे केस 1 केस 2 दीटा को रिजल्ट अनुसार रिपोर्ट करिवो आगो केस 1 तार रिपोर्ट ता तळे रिजल्ट टेबल रहइबो तापरे केस 2 रिपोर्ट रिजल्ट टेबल रहइबो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस No, sir. नहीं तो अच्छा मु तो एगुडा को पठेई देबी सही एरे तमे तम भितरे डिस्ट्रीब्यूट कर दबो हला सर जो सोशियो पर्सनल रो जो 20 होची मैक्सिमम स्कोरटा हां हां सेटा कोटी एटी अछि पर एटी सोशियो पर्सनल हिस्ट्री कुडी एटी देखो एटी हां हां ठीक ठीक 1 फॉर ईच
Sleep, feeding, personal care, and social relationship normal. 0 Sir. for each one. Sleep problem ଅଛି କି feeding problem ଥିଲା କି ନା ନା ସାର୍ ମାନେ childhood ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମାନେ personal care ରେ problem ଥିଲା କି social relationship problem ଥିଲା କି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏକ ଏକ for each ତାମାନେ ଏଠି କେତେ ହେଲା 1 2 3 4 4 ଏଠି ଆସିବ ସେମିତି neurotic traits nail biting thumb sucking morbid fear ଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ ये सब मिसिकरी 28 मैक्सिमम का टोटल का एक्चुअली हमें मु जो एग्जांपल टा देइछि हां स्कूल हिस्ट्री तो देइछि 10 सोशियो ये देइछि 3 एटा कैलकुलेशन टा आउ जन कर हिछि एक्चुअली ये गोटे केस एटा कारण स्कूल हिस्ट्री तो 3 आउ गोटे केस र कैलकुलेशन हिछि स्कूल हिस्ट्री 6 7 और एटा एग्जांपल भले दिया हिछि तुमको बुझेगा पे जे केमिति रिपोर्ट करा डाटा एठु आसीबो आसीकि तमे रिपोर्ट करियो एनी अदर प्रॉब्लम आउ किछि पचारिबार अछि कि नले मु आउ गोटे जो रहिला टीएटी सर फैमिली एंड स्कूल हिस्ट्री रे जो अछि परफॉर्मेंस इन एकेडमिक सेतिरे 4 पई 3 अछि एवरेज पई 2 गुड पई 1 एंड वेरी गुड पई 0 मे बी गोटे पिला जदी 4 अछि ताले हमरो स्कोर होबो 3 हां आज्ञा से अनुसार मार्किंग एटा नेगेटिव मार्किंग परा आज्ञा सर हमें ए जो स्कोर टा आसुची ए स्कोर टा तार कहबो माने बिहेवियर रे खराब साइड टा को देखेबो ना तमे केस हिस्ट्री काहे नउचो समथिंग इज प्रॉब्लम हमें जदी वेरी गुड टा को दे देबो 3 ताल त सेटा तार पॉजिटिव साइड टा आसी गला स्कोर एडिशन रे एटी जो स्कोर आसेला 9 आउट ऑफ 45 दिस 9 इंडिकेट्स जार 15 होबो से आउरी खराब बुझ परछ ना दिस इज ए नेगेटिव हां जते बॉडी जीवो एटा इट्स नेगेटिव तार तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री यार 9 अछि आ जनकर 15 आसिला ता माने तार डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज पुअर याटू खराब ताटू जते 15 टा एटा बॉडी बुझियाला ना नहीं आज्ञा सर Sir, I have one question. हां यस Sir, do we have to administer this test on the parents of high school kids or the high school kids itself? Actually, a case history is to be administered on the parents and a teacher. It's you get the information from the relevant persons who can report on all these things. पिला तो निजे कहि परिबनी से तार व्हाट all those things the child cannot or the student cannot fulfill माने answer मनकर supposing performance in the academics where from you will get the answer from the teacher. Right, sir. I get it. Thank you. सेमती प्रीनेटाल एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रेगनेंसी पिला जन्म होवा पई थिला बेले बापा मांकर पिलार ऊपर माने एटीट्यूड कोन मनकर द चाइल्ड इज ए फिफ्थ चाइल्ड द पेरेंट मस्ट बी अनवांटेड चाइल्ड दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर हला इज इट ओवर फॉर ऑल ऑफ यू Yes, sir. yes now the last one I will be discussing let me the last one is TAT and let me show you the TAT card TAT thematic apperception test now TAT is again a projective test we have conducted Rorschach as a projective test and TAT as another projective test. And we have conducted Beck's depression inventory as a questionnaire and straight test and the tinta questionnaire based measurement or we call it diagnostic measurement सब ये questionnaire रे data
projective. तीनटा दीटा हमें करदेले total रे. Now, what is a projective test? I have already told you. Now, TAT, thematic apperception test, means this is a test, very popular test. या विषय तुम material भी दे देवी जहाँ रखकर सब लिखिबो. And that is, the test is like this. It's a figure like this. ये बड़ा तुमको 10टा टेस्ट फिगर दिया खाली मैं देखी दी जाऊँ. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 नौटा. इतने नौटा actually T8 रे विभिन्न नंबर रो कार्ड था, but this is a group of card which needs to be administered. About TAT administer करिया पे टिके माने you can also take same 2 subjects and largely टिके भलो age group रो elder subject नेले better. But तम मानक निज भितरे दे किरी respond करी किरी तब कोले better. Now, what is this test for? This test is used for a variety of clinical purposes. For different clinical testing, what is the kind of thing that you are including anxiety, depression, bipolar disorder, schizophrenia. Schizophrenia because sometimes they cannot respond appropriately. But in most cases, for diagnostic purpose, this is a test being used in many other kinds of things. And personality, so common purpose, it is being used for some other common purpose. And like that. Now, what you have to do about this test? Make up a story around this picture. You will be shown as a client, as an you will be shown this picture, and you will be asked to write a story on this picture. You see this picture and write a story. Like all good stories, it should have a beginning. Whenever you will be writing a story, you ask the person to write. You should have a beginning about the story. That means the title. Anything? The beginning about the story means the title or title. Title. Beginning means you introduce. Okay. What you want to tell about. Supposing here you say that here is a boy who is having a sitar in his hand and the boy looks like the beginning, whatever. Storytelling, beginning. And then middle and ending. Tinta ka jinsa rahibo storytelling re. You know what is the format of a story. The story begins with some ideas, some kind of things. First, it is being given about some ideas, then some kind of elaborations, and some kind of conclusions. That is a story. yes. Then write the story about what is happening at this moment, What is the character, what the characters are thinking and feeling. And what led up to the situation, what the outcome will be. बुझिपाल ना स्टोरी मॉडल केमती हबो. Any question about? बुझिले तो करिवो. बुझियाला तो? Yes, sir. हाँ. तापरे तांको instructions रहिबो. Never try to copy story from some other source. आउ को जगह तुम स्टोरी टा सुनिचे ताको आनी मिसेज देकी दे लगे दबनी. Always give the age of character. जो कैरेक्टर विषय कोचो तार एज विषय कहबो यार ए मन कहे दिस इज योर कैरेक्टर हियर ओनली कैरेक्टर ए भितरे तमे ता एज विषय कहबो व्हाट लेड टू द स्टोरी व्हाट हैपेंड इन द एक्शन पार्ट एंड प्रॉपर एंडिंग ऑफ द स्टोरी. तम गोटे गाइडलाइंस फॉर द स्टोरी हला.
प्रति प्रति आइटम को प्रेजेंट करी तमे कार्ड 1 एटा कह कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 प्रतिटा उपरे 9टा कार्ड उपरे 9टा स्टोरी लिखा हम एनी क्वेश्चन अबाउट दिस No, आउ sir. स्टोरी गुडा को तमर प्रैक्टिकल अटैच हबो अच्छा A story. हां Sir, we will attach the story in the practical record. हां यस Okay. तार एनालिसिस हबो ना करथिबो ना जेतले से चाहिए कोन एनालिसिस करिछ केमिति देखिबा पे से दे हैव टू गो टू द स्टोरी कैन स्टोरी इज द प्राइमरी रेस्पॉन्स अच्छा वन थिंग आई कैन हेल्प यू जे लेट अस डू इट फॉर वन सब्जेक्ट ओनली दैट इज इन आवर हैंड हमें के जनकर करू Okay. Okay. हैला जण को पिक्चर कार्ड गुड़ा भी अटैच हो कि ना पिक्चर कार्ड अटैच ना पिक्चर कार्ड अटैच न कले नहीं नहीं स्टोरी तार पिक्चर कार्ड अटैच करिवार किछ नहीं जे दिस इज माने प्लाई जो ये कॉपीराइट जिंस है जीव नहीं पिक्चर कार्ड अटैच करने किंतु तमे यू कुड हैव द पिक्चर कार्ड विथ यू जदि दरकार पड़ला तमे सेठी शो करिवो तम डॉक्यूमेंट रे अटैच कर बुझी परछ ना नहीं आज्ञा जदि तुमको एक्सटर्नल कहला कौन को स्टोरी एटा तुम ताते तो नंबर देइथबो तुम से केटा काढी के देखि दी पारिबो यू कैन कैरी विथ यू किंतु सबमिट कला बेले सबमिट करिवो काहे कि म कहूची ना एगुडा हमें वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट पब्लिक बिकॉज़ दिस इज माने तार जे करिछन तांकर पेमेंट अछि ना एक्चुअली ए जिंस गुडा हबा दरकार इंस्टीट्यूशन हैज टू प्रोवाइड दिस थिंग्स ऑफिशियली बाय परचेज मान रखितांदे हुई तांकर अछि भी किंतु जेतु ऑनलाइन होची हम तो ए कर परिबुन ना एनीवे तमे प्रैक्टिक एको गोटे सेट इथरो गोटे सेट जो इंक ब्लॉट एको जेरस करी कि तुम तमरा पाखे रखितो हला आउ कोन रहिला कि भीतर माने ए विषय में तापर खाली इंटरप्रिटेशन को जिबी बर्तमान तमे जानिलो तो एको देइकरी कोन करिया को हबो किछि पचरिवार आउ कार नहीं तो हो बर्तमान एटा को मु क्लोज कर देली तार खाली इंटरप्रिटेशन को जिबी हेरी now TAT scoring use 5-point scale 0 to 4 8 story description ambiguous unambiguous incomplete complete factual emotional बुझे होची ना नहीं if the story is incomplete na incomplete ambiguous na unambiguous factual na emotional ताको डिपेंड करी करी ताको 4 रु 0 एटा unambiguous incomplete factual मन कर जनकर हला ताल तमे 4 रु तमरो डिसीजन अनुसार ताको दबो केते बुझी परछो ना नहीं then stimulus perception whole major details minor details deviation from the typical response minor major deviation from self low high एकु बेसी एई सबु मिसिकरी तार 4 नंबर एकु कंसीडर करी करी आज ए पर्सन आज ए
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तमे ताकू नंबर दबो एक मिसिकरी 4 रु केते पाइबो से बा आकू 5 पॉइंट स्केल करी करी मते तमे रिपोर्ट करी परिबो then level of interpretation concrete factual realistic tone of the story quality of telling केमिति कहलिया फोकल फिगर को फिगर को से ए कला एई गुडा को सब तार रेस्पॉन्स कैटेगरी रे आसीबो हला तमे माने एको करी सारी करी एई थरे तार नंबरिंग करी करी तार तापरे रिपोर्टिंग हबो एको पढी देले बुझी परिबो जे सिथरे कोन कोआ होउछ तापरे टीईटी रो थियोरेटिकल जिंस कोन कोन जिंस किए बाहर करथिले ए सब टीईटी रो जिंस तापरे इंटरप्रिटेशन केमिति हबो तार क्रिटिसिज्म कोन कंटेम्पररी एप्लीकेशन कोन टीईटी विषय में किसी मटेरियल देली जोथरे कि तुम इंट्रोडक्शन एनालिसिस माने रिजल्ट फाइंडिंग्स डिस्कशन एगुडा को करि परिबो कोन आउ कोन पचारिबार अछि और एल्स द क्लास इज ओवर फॉर टुडे आ तुमको जो मु क्वेश्चन कोन दबा कथा कहिथिन मु टिके परे देबी सर रोस्टर कर स्कोरिंग ता के कहि छन्ते हां मु रसाकर स्कोरिंग ता कहि दोछ गल अच्छा वर्तमान एटा सरी गला मु एटा को बंद कर देली रसाक मु कले मु बही रु कहि कारण काली तुमको पठै सरला परे मु आउ तो सेटा डेस्कटॉप रे रखुनी ना मु बही रु कहि दो रसाकर स्कोरिंग आउ कहार कोन मु रसाक कहि दोची तापर जदी कोन कोड गला रसाक इन ब्लड टेस्ट 211 now rosaकर स्कोरिंग तुमको मु पठेची मु खाली एक्सप्लेन कर दोची रोसाकर चारिटा डायमेंशन रे स्कोरिंग हबो गोटेला लोकेशन गोटेला डिटरमिनेंट्स गोटेला कंटेंट कैटेगरीज गोटेला पॉपुलर रेस्पोंसेस गोटे रोसाक रिपोर्ट को चारिटा कैटेगरी रे स्कोरिंग हबो हला प्रथम हला लोकेशन लोकेशन रे कोन जदी से जो रेस्पॉन्स देची से रेस्पॉन्स ता जदी होल पिक्चर को एकाठी बुझौची टोटल पिक्चर विषय रहउची ताले दैट इज होल एंड इट विल बी रिपोर्टेड एज अ डब्ल्यू ता रेस्पॉन्स रो कैटेगरी हला डब्ल्यू होल होल माने कोन बुझो ना नहीं जहा चित्र देखुची से जहार कहिला से विषय रे से चित्र विषय रे से चित्र रे को पार्ट से छाड़ी जाईनी everything is included in his report in his verbatim report हेडा होल आउ जने कोन करिछि चित्र रो मेजर पार्ट कहिछि किंतु गोटे पोर्शन छाड़ी जाईछि मुडे काम करूछि रोसाक म एक्चुअली से कोन कि डेस्कटॉप रो उड़े दोछि तो रोसाक अछि केठी हाँ अच्छी रुसा काट सकती अच्छी वर्तमान एटा कोन जणे कुह आगो लोकेशन हमें डिटरमिन करिबा एनीबॉडी गिव ए रेस्पॉन्स गायत्री यस सर हाँ कुआ बड़ पाटरे तम स्क्रीन में जोटा देखाउ सेटा कोन मत माने तुमको हाउ डू यू टेल अबाउट द पिक्चर यू सी कोन सेटा सर काली तो कहिथिले सेटा जे तुम को कि मु त माने ये कोन कहबो कि नहीं जहा मन को से कहबो तमे को कोन तुमको लिखुची एटा
ମତେ ସାର୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦିପଟ ସାଇଡରୁ ତାକୁ ଦି ଜଣ କିଏ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କଣ ହବ ହୋଲ, କାରଣ he said that somebody in the middle and both sides, ସେ କୋଉ ପାର୍ଟ ଛାଡିଗଲାନି, ତେଣୁ the response is whole। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯଦି କିଏ କହିବ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ସେ ମଝିରେ ସାର୍ ଜଣେ ବାଦୁଡି ଅଛି, ଅଛି। ହଁ ଦିଟା ବାଦୁଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ କଲା, ଏଇ ଦିଟା କହିଦେଲା ମଝିଟା ଛାଡିଗଲା, ସେଟା ମେଜର ଡିଟେଲ। ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲା ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ କେତେ କଭର କରୁଛି, ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କରାହଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଖେଇବି ଯୋଉଥିରେ ତମେ ଜାଣିବ। ହଁ ଏଇଟା କହିଲ, କିଏ କହିବ? ସୋନୁ ଲିପ୍ସା? सर प्लेट 8 टा पचारुଛନ୍ତି। ହଁ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଛି ଶୋ କରିଛି ଆଉ କଣ। मते दी साइड रे दीटा पीक थिला बळे देखा जाउची। ଦିଟା କଣ? पीक पीक घुसुरी ପିଗ୍, घुसुरी भळे देखा जाउची। ହଁ ଘୁଷୁରୀ ପିଗ୍, ହଁ तापरे मझिरे गोटे प्रजापति अछि तळे पूरा तळे प्रजापति गोटे अछि। आउ ऊपर दीटा जानी होनी। ନାଇଁ ମନେକର ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ଦିଟା ଘୁଷୁରୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପିଗ୍ ଦିଟା ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଇଏ ବଟରଫ୍ଲାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଏ ପର୍ସନଟା ଛାଡିଗଲା, ତେଣୁ ତାର ଲୋକେସନ କଣ ହବ ଏଠି? ହୋଲ ହେଲାନି, ମେଜର ଡିଟେଲ ଆସିଲା। मेजर डिटेल्स। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଖାଲି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ, ମାନେ ସେଟା କାହିଁକି କୁହାହଉଛି ମେଜର ଡିଟେଲ, ଏଇଟା ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ୟାକୁ ହୋଲ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଥିବ ସେମାନେ ୟାକୁ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ହୋଲ, ମେଜର ଡିଟେଲ, ମାଇନର ଡିଟେଲ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ଫର ପିପୁଲ ହାଭିଂ ସମ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇସ୍ୟୁଜ, ମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁଜ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଂଜାଇଟି ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ ଗୋଟେ ପିକ୍ଟେ ଅଛି ୟା ଭିତରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ। ସେ ଏ ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିବ ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲୋକେସନ ପରେ से डिटरमिनेंट। ହଁ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟସ, ସେ କହିଲା ପିଗ୍, ପିଗ୍ ମାନେ ଆନିମଲ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ। ସେ ଏଇଟାକୁ ମଣିଷ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ମଣିଷ, ଆନିମଲ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟରେ କଣ କଣ କଲର, ଏଇଟା ପିଗ୍ ଇନ୍ ଏ ପିଙ୍କ କଲର, ପିଗ୍ ମାନେ କଲର ଇଜ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟର ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କୋଉଟା ଫିଟ୍ ହବ ତମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ, ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? यस सर। ହଁ ନିଜେ କରିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପଠେଇଛି ତମ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ଯଦି ୟୁଜ କରିକିରି ଦେଖିବ, ପଢିବ ଟିକେ, ତାପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କଣ କଣ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରିକିରି ତାପରେ ଜାଣିବ, ମାନେ ତାର ରିପୋର୍ଟଟେ ଆସିଲେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଜଣେ ଲେଖିକିରି ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଧରିକିରି ତାକୁ ସ୍କୋରିଂ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଫର୍ମାଟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଇଠି ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରିହବନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହାର କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ଅର ଏଲ୍ସ ଦ କ୍ଲାସ ଇଜ ଓଭର, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ ଆର ଓଭର। ତମକୁ ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 5ଟା ରେକର୍ଡ ଫାଇନାଲ କରିକିରି ମତେ ଦସ୍ତଖତ କରେଇକିରି ସବମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହେଲା ତମର କାମ। ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ଆଉ କିଛି କାହାର ପଚାରିବାର? ହଁ ନାଇଁ, ସାରିଦେବା କ୍ଲାସ ତ। ସାର୍ କେବେ ଆଜ୍ଞା ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ସବମିଟ କରିବାର ଅଛି? କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଟା ତମର ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଇଏ ସେ ତାକୁ ଜାଣିକିରି ତମର ଯେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିକିରି କାମ ଚିଣ୍ଡେଇ ଦବ ସେତେ ଭଲ। କାରଣ ଥରେ କ୍ଲାସ ହେଇଗଲା ମାନେ ତମେ ମାସକ ଭିତରେ ସାରିଦେଲେ ବେଟର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦସ୍ତଖତ ଯେତେବେଳେ କରେଇବ,
it will be better that you make a time of arrangement so that at a time some people joni je asikri mate phone kari kale I don't have time. बुझ परछो ना नहीं दी जण Sir, आसिले IGNOU will तीन give, जण आसिले sir, IGNOU will give message for submission of records. Email. They will email us. ଦେଇଛନ୍ତି ସବମିଶନ ଅଫ ରେକର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ Sir, not now. ନାଇଁ ତମକୁ ସବମିଶନ ଅଫ ରେକର୍ଡ ଟାଇମ ସେମାନେ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା Yes, ପୂର୍ବରୁ sir. Sir, previous year they sent email for that please. ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ତ ସେମାନେ ଦେବେ ସବମିଶନ ଇଜ ୟୋର ଚଏସ କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଯୋଉ ଦସ୍ତଖତ କରେଇବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ ସେଇଟା ତମେ ମାନେ ମନେକର ତମେ 30 ଜଣ ତମେ 2 ଜଣ ଜଣେଇକିରି ମତେ ଖବର ଦେଇକିରି ଆସି କରି ମୁଁ ତ ଆଭେଲେବୁଲ ହେବିନି ନା ସବୁବେଳେ ତମେ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କର ମାନେ 10-12 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ୟୁ ଫିକ୍ସ ଏ ଟାଇମ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ଏକାଠି କରିକି ଦସ୍ତଖତ କରି ନେଇଗଲ ନହେଲେ ଇଭେନ ମତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବେଶୀ ହେଲେ ଏକାଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କୋଉଠିକି ଯାଇକିରି ସେଇ ଇଗ୍ନୁ ଅଫିସ ପାଖରେ ଗଲେ ତମେ ସେଇଠି ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବେଳେ ବେଳେ ପିଲେ ସାର୍ ମୋର ଦସ୍ତଖତ ହେଇନି କରିକିରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଟାଇମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା Okay. ଆଉ କଣ ମୁଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି ପଠେଇ ଦଉଛି କଣ କଣ ସୁଜିତ ପାଖକୁ ପଠଉଛି ସେ ତ ପଠେଇଦବ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ପଳେଇଲା ନା ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା ସୁଜିତ ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି କେସ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ Yes, sir. ର Case କାର୍ଡ reporting, TAT scoring. ଆଉ ସ୍ଥାୟୀର ଆଜ୍ଞା ଇଏଟା ତ ଆଗ କାଲି ଦେଇଥିଲି କୋଶ୍ଚିନିୟରଟା ଖାଲି ପଠେଇଦେଲି ତାର ଲେଖା କିଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଗଲା କେସ୍ ଆଜି ତ 3ଟା ହେଲା ଏ 3ଟାର ଫାଇନାଲ ଦେଇଦେଲି ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରହିଲି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା Aଜ୍ଞା, ସାର୍ sir. ନମସ୍କାର Thank you. ସାର୍ Namaskar, sir. Thank you, sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର